तो हेलो जी, वेलकम बैक टू फादखान। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है। तो मेरे पास इस वीडियो का रिक्वेस्ट आया था लगभग ईद से पहले, यानी दो ढाई हफ्ते पहले। तो उस टाइम पे किसी ने भी रिएक्शन नहीं दिया। फिर 60 डेज ऑफ लॉकडाउन इन काठमांडू 4K, इसके ऊपर रिएक्शन देंगे कि 60 दिन कैसे गुजरे लॉकडाउन के काठमांडू शहर में, वो देखते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में ऊपर आई कार्ड में व्लॉग चैनल में, तो देख सकते हैं। कबूतर cameras. काफ़ी अच्छा वैसे, जब ऊपर स्टार्टिंग वीडियोस में मैंने रिएक्शन किया था, जो ऊपर से ड्रोन गई हुई थी काफ़ी अच्छी थी, वो भी अच्छा लग रहा था। ये ड्रोन से काठमांडू से नेपाल। Nepal 860 days of lockdown. This is the Kathmandu we have always seen and remembered. Vibrant and full of life. There has been a change lately. While nature goes through its cycles as it always has for millions of years, the streets of Kathmandu have become as empty as the skies. But perhaps there is a silver lining to it. While most of us stay inside the safety of our homes during this lockdown, the familiar streets of Kathmandu now have an unfamiliar face. This is Singha Darbar, a palace complex built by the Rana regime in 1908. It currently houses both chambers of the Parliament of Nepal, the House of Representatives and the House of the States. It also serves as the headquarters of the state-run Radio Nepal and Nepal Television. Situated at the core of Kathmandu and usually busy with heavy traffic, much of the vehicles that now can be seen are construction vehicles which the government has been allowing during the lockdown. Pakistan में भी दिया था construction के काम के लिए। The Supreme Court of Nepal, which is situated next door, seems equally quiet for now. As we cross into Kathmandu through the district border alongside Lalitpur, the traffic remains closely monitored. For now, within the Kathmandu Valley, a very limited number of vehicles run through the veins of the city. Making our way through the gates of New Road, we first enter what is usually one of the busiest of the 7 World Heritage Sites inside the Kathmandu Valley. Yes, this is the most beautiful area of Nepal. Kathmandu Darbar Square, known locally as Basantapur, is home to medieval temples and palaces reminiscent of bygone eras. With a handful of people present here instead of the hundreds or at times thousands, the Mask of Sweth Bhairav, which is usually opened once every year on the day of Indra Jatra, is open on this particular day of the lockdown. Alongside the old brick temples and palaces, the Kaddi Darbar, with its Greek columns, white plaster and balconies, all features foreign to Nepali architecture, is highly influenced by European styles. While the usually busy squares of Basantapur has come to a standstill, so has New Road, the busiest commercial area of the city, which is built around Kathmandu Darbar Square. Home to bustling marketplaces, this commercial hub, like other market areas of the city, has been shut for over 2 months now.
most of the activity that can be seen for now is limited to delivery trucks bringing in essential supplies. I also met a resident who keeps himself busy preserving the old sculptures that line these old streets. Not too far away, as the first ever public clock tower in the country rings amidst the silence, it can be heard at the Narayan Hitti Palace, which housed the royal family until 2007 and since has been turned into a museum. The malls and restaurants that line the Kingsway or Darbar Marg all remain closed. काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है यहाँ पे नेपाल में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इनके रोड्स काफ़ी क्लीन होते हैं, कचरा बिल्कुल भी नहीं। ये आई थिंक कैपिटल है, इस वजह से। The nearby tourist hub of Tomel is quiet like it has never been before. क्योंकि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो भी इसी तरह साफ सुथरा होता है। Shahid Gate, which was built in memory of the country's martyrs, few vehicles pass by every now and then, and even fewer people. Next to it stands the newly built Nepal Army headquarters. The Nepal Army has been lauded for playing a vital role in containing the spread of COVID-19 in the country so far. Few meters away from Shahid Gate, the 203 feet tall Dharahara, which was destroyed during the earthquake in 2015, gets rebuilt slowly, while a few workers maintain the grounds of the biggest stadium in the country, Dashrath Rangasala, which was renovated recently for the 2019 South Asian Games that was hosted in Kathmandu in December. Outside Dashrath Rangasala, the roads of Tripureshwar ring with the occasional passing vehicle. Throughout the rest of the city, the scenario remains pretty much the same. Empty roads except for a few vehicles, patrolling police outfits, silent public parks, empty temples, quiet banks and stagnant construction sites. बैंक तो Non-essential पाकिस्तान में ही government बंद नहीं हुई offices, कि restaurants लॉकडाउन में भी and नहीं travel ओपन थे related बैंक services सारे। all remain closed. And although what we have always been accustomed to has been brought to a halt, for how long only time will tell. But perhaps as we deal with these unprecedented times, there are lessons to be learned regarding how we treat our city, each other, and ourselves. The clearer skies and cleaner streets of a lockdown Kathmandu have a message for us all. This is the Kathmandu we could be living in even once the lockdown ends. Yes, we all want to go back out and live our lives like we always have.
But once this lockdown ends, it becomes our duty to live more responsibly and to treat our city like we would treat our own homes. Because it is. To not only preserve what has been given to us by our ancestors, but also that which was given to us by nature, and to live a life of greater harmony with ourselves and our surroundings. अच्छा, अगर इस स्टोरी को देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली बनाया गया। मुझे ये तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले ये वीडियो मौसूल हुई थी, यानी मुझे इसका लिंक आया था, तो तब मैंने बोला यार आज रिएक्शन देते, फिर कल रिएक्शन दे। उसमें बीच में ईद आ गया, तो 3-4 दिन जो थे वो ईद के ऐसे भी गुजर गए थे। वो ईद से पहले भी मैं अपने प्रोजेक्ट में बिजी था, जिसकी वजह से मैं रिएक्शन नहीं दे पाया। फिर देखा था यार एक पाकिस्तानी लड़की ने रिएक्शन दिया, फिर एक लड़के ने रिएक्शन दिया, तो आप लोग भी उनको पता है, आप जानते हो। और दो चैनल ने अभी तक मेरे ख्याल से चैनल ने रिएक्शन दिया था, बाकी भी किसी ने दिया होगा, बट उसके बारे में मुझे नहीं पता। बट अगर देखा जाए तो यार ये 60 डेज ऑफ लॉकडाउन जो था लोगों के लिए काफ़ी बुरा साबित हो सकता है। बुरा लोगों के लिए, सबके लिए बुरा साबित हो सकता है। बट वो 2 महीने कैसे गुजरे मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं आप लोगों को एंटरटेन करते जाता हूँ, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता कि यार वो 2 महीने मेरे कैसे गुजरे, क्योंकि मैं लॉकडाउन में भी वही काम कर रहा हूँ, लॉकडाउन के बगैर में। हाँ, अगर लॉकडाउन में ऐसा होता कि मैंने कोई ब्रेक लिया होता 2 महीने के लिए, तो फिर कह सकता था कि यार मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया और अब मैं रिएक्शन की वीडियोस वापसी बना रहा हूँ, तो थोड़ा ब्रेक मुझे मिल जाता। बट मैं ब्रेक मैंने नहीं लिया, मुझे कोई ब्रेक नहीं मिला, तो इस वजह से जो मैं नॉर्मल डेज़ मेरे लिए होते हैं वैसे भी, क्योंकि मैं जॉब पे भी वैसे ही जाता था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था, हॉस्पिटल के जॉब के लिए भी वैसे ही जाता था, आपको लोग वीडियोज़ भी देता था। अच्छा, बात करें 60 डेज ऑफ लॉकडाउन की, तो इंटरेस्टिंग बात इसमें ये कि भाई इसकी वॉइस ओवर बहुत अच्छी की गई है, एक शॉट लिया गया है, गिम्बल से लिया गया है। बट अगर देखा जाए तो बंदे ने रिसर्च काफ़ी अच्छी की कि 60 डेज में क्या क्या हुआ। मेन चीज़ ये है कि इंग्लिश में थी ये डॉक्यूमेंट्री, जिसकी वजह से काफ़ी पसंद आई मुझे, और लोगों को इसी वजह से पसंद आई होगी कि ये डॉक्यूमेंट्री थी वो भी इंग्लिश में थी, तो जिसकी वजह से लोग इसको पसंद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात ये करें कि इसने एक चीज़ दिखाया। एक कंफ्यूजन मुझे इस बात में है कि यार जो काठमांडू सिटी की जो रोड इतनी क्लीन है, इतनी साफ है, वो किस वजह से है? कैपिटल सिटी है इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की जो कैपिटल सिटी है उस वजह से भी यहाँ के भी मतलब रोड साफ होते हैं। कैपिटल सिटी पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद, काफ़ी क्लीन रोड और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। बट अगर अराउंड कराची देखा जाए तो कराची में भी कुछ अच्छी जगह हैं, कुछ जैसे कि कचरा होता है, तो मुझे इस बात में समझाया जाए। दूसरी बात करें अगर इसकी एक एक चीज़ के बारे में, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोगों ने लॉकडाउन को फॉलो किया, और नेपाल के लॉकडाउन की वीडियो भी बनाई जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और लोग घरों पे नहीं बैठ रहे थे, पुलिस डंडे मारी थी, तब भी रिएक्शन दिया, ऊपर ड्रोन वाली वीडियो से भी रिएक्शन दिया, एंड लास्ट उससे एंड देन कि अब 60 डेज ऑफ लॉकडाउन के ऊपर भी रिएक्शन दिया। तो मुझे तो ये सारी सिनेरियो तो ऐसे लगी कि यार मेरे लिए कोई ब्रेक नहीं है, मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि यार मैं तब भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे ये काम अच्छा लगा।